So today we'll discuss the basics of your networking part. Okay. So Om Tripathi, yeah, good morning. So please join as soon as possible so that we can start. So as last class we discussed the networking components, also the networking devices, also the definition of networking, types of network. These things we have already discussed. So we'll just have a look on it. Okay, so let's discuss it from the beginning. Okay, so we discussed this networking. What is network, right? So the network is what? The connection of two or more uh, computers which may or may not be situated in a particular geographic location. Okay, computers link together to enhance individual and group productivity. Okay, so we discussed, like, if more than one computers are connected with each other, we can call it as a network, right? So use of network, where do we use network? Okay, so network facilitate what? So that means network facilities are the sharing of data and resources. Okay, so how do we share the resources? Resources in the sense like files, database, application, software. Okay, so these data are transmitting, but what is the medium? How do we share the data? Through network. Okay, communication, for communication like emails, also we use what? uh, Network. For remote computing, grid computing. Okay, also discussed the last class. Also we covered this thing, type of network. Okay, so in type of network we discussed what? This LAN. Okay, just a minute. We also discussed what is LAN, what is WAN, what is MAN. We discussed. Okay, so we'll just cover that one. Okay, see. So what is this PAN? PAN is what? Personal area network. LAN, local area network. We discussed. Uh, so last class we missed this one, missed this term. CAN, campus area network. MAN is what? Metropolitan area network. Similarly, WAN is wide area network, internetwork. That means network of other networks is called as inter network. Okay, which is your internet. Okay, we are using internet, so it is this one. Internet is what? Network of networks, right? So what is PAN? Personal area network, right? So it is a computer network used for communication among computer devices close to one person. Okay, some devices, some examples of devices that are used in PAN are printers, fax machines, telephones, etc. Okay, so nowadays also so many offices are using fax machines. Everybody are using printers now, right? Telephones, still some of the users are using telephone, right? So it is what, like, one to one personal devices they are having. Okay, so like mobile phone also, it's a personal devices. I am keeping one devices with me, you are also keeping one devices with you. So if I want to communicate with you, I will call you and you will respond. So that medium is what? Network. Network is the medium here. Okay, so it's a computer network
used for communication, okay, among computer devices. Okay, so let's say pan also, printers also, right, fax machine. Okay, whatever the message I will be giving, it will be printed somewhere. Okay, what the address I will be giving, it will be delivered there, right? So these are the personal area network, is called as pan, right? PAN, right? So pans may be wired with computer buses such as USB and firewall. Okay, सो ये जो पैन है, ये पैन बेसिकली क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर बसेस बसेस क्या है कि सम काइंड ऑफ वायर्स, ओके, तो वायर्स के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है, ओके, यूएसबी हो गया, फायरवेयर हो गया, ये सब वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ओके। तो वायरलेस पर्सनल नेटवर्क भी होता है उसको, तो पैन को हम लोग पैन का अगर वायरलेस वर्जन हम लोग ढूंढेंगे तो उसको क्या होगा, डब्ल्यू पैन, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट, डब्ल्यू पैन, ओके। तो ये भी आपका पैन का ही एक वर्जन है, राइट। सो डब्ल्यू पैन कैन ऑल्सो बी मेड possible with network technology such as IRDA and Bluetooth. ओके, जब हम लोग ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज करते हैं कनेक्शन के लिए तो भी वो वायरलेस नेटवर्क हो जाता है, राइट, क्योंकि वो कोई वायर के थ्रू तो कनेक्ट रहता नहीं, वायरलेस है, राइट। सो दैट इज व्हाट डब्ल्यू पैन, ओके। सो आई गेस यू आर okay with this. Let's cover to pan now. Pan also discussed. You see the diagram here. Okay, you see this is pan. Okay, this is computer. Okay, this is one camera you can see. Okay, this is another wireless device, let's say printer. Okay, this is another devices. Okay, so all these devices are connected with each other. Okay, so you can see transmission of data through short range radio waves. Okay, connected wireless device, enabled device connect without limitation of cables. Okay, so these are what pan. Similarly, you have local area network. Okay, so LAN is what, this is a network covering of small geographical area, we discussed last class, right? So no need to discuss as we miss WPAN and all, so I'm covering it. Okay, next you see the diagram here, LAN. Okay, now you can see this is one workstation. Okay, this is workstation 1, this is workstation 2, this is workstation 3. Okay, and this is also one of the server which is connected with the computer. Okay, so all these devices are connected with the internet. Okay, so as it is network of network, so we can call as internet, right? So all these are networks. Okay, so this is a local area network, that means internet connection is there. This is workstation 1. Okay, one of the computer here, second computer, third computer, and all these computers are connected with one server, connected with the internet. Okay, so this is what, this is your LAN. Okay, local area network. So similarly, you see here campus area network. Okay, campus area network, this is a network that connects what, two or more LANs, but that is limited to specific and contiguous geographical area such as college campus, industrial campus, office building, military base. Okay, so this can be called as what, this can be called as what, your campus area network. Okay, so now you see this is generally limited to smaller area than typical man. Okay,
So you see here the last slide which I have shown to you. These are the computers. Okay, so computers are connected with each other. So this is a LAN connection. When this LAN connection we will establish inside a building or inside a campus, okay, let's say military base, office building, industrial complex or college campus, whatever, in a specific geographical location, this can be called as what? Your CAN, campus area network. Okay, so next, metropolitan area MAN. Okay, we already discussed last class also. What is that? MAN is designed for what? A larger geographical area, such as your some metropolitan cities, let's say Kolkata, Delhi. Uh, okay, so these are the metropolitan cities where the connections are designed uh, in such a way that several blocks or buildings will be covered. The entire city, through the entire city, it will be covered. Okay, so this will be your metropolitan area. So similarly, wide area network, so which is called as your WAN. We discussed last class that when it's the matter of one country or certain region, we can call this what? WAN, right? So let's say I'm talking about I want to build a connection in between India and Japan. Okay, so some data will be transmitted from India to Japan. This is India and let's say this is Japan. The connection will be established. So in this case, one will be there. Okay, so ones are used to connect LANs and other smaller networks together. Okay, so this is one. Okay, you just remember these things. These are very important for your semester exams. Okay, if you have networking subject, you may get questions, long questions or short questions for this. Okay, so ones are often built using leased lines. At each end of the lease line, a router connects to the LAN on one side and a hub within the one and on the other. Okay, so leased lines can be very expensive. So instead of using them, ones can be also built using cheaper circuit switching or packet switching methods. Okay, so you see this. This is the diagrammatic presentation of your one. Okay, this is a LAN connection, and this is a communication subsystem. Okay, so it can be connected through some kind of communication subsystems. These are the gateway routers. Okay, so these are the routers connected with routers. Okay. LAN means, let's say this is a local area. Okay, let's say I'm talking about a particular specific region. So these devices are connected with this router. Okay, okay, now it will be switched connected with this. Okay, similarly these LAN will be connected to this router, this. Okay, and this is called as what? Wide area network. And similarly we can connect to other autonomous system routers. So this is, in this way the data will be transmitted where? In one. Okay, so you can see this is a LAN switch. Okay, these are the network users. You can see this is a desktop. Okay, so this desktop is used by a network user, right? These are the users, right? These are the users. These are the servers. These are the servers. Okay, network servers. Okay, connected with each other. Okay, next, internetwork, right? Internetwork is what? Internet. It is nothing but your internet. When two or more networks or network segments connected with using devices such as router. Okay, so we can call it as what? Internet. Okay, in interconnection among between
public, private, or commercial, industrial, or governmental networks may also defined as a internet. Let's say this is a computer, this is a computer, this is a computer, okay, of a particular region. Similarly, this is also a computer, is a computers, okay, of a particular region. When we can establish the connection between all these things, okay, and also these are the web servers or okay, web servers. So this computer will be connected to the web servers, okay. So this will form a network, that means network of network. So in this case we will consider this as a internetwork, okay. So in modern practice, interconnected networks use the internet protocol, IP, okay. I guess last class I discussed the IP. What is IP? IP address I have shown to you through the command IP config, right? IP config in Windows and if config in Linux. I just put that command in the terminal, and you have shown the result also. Okay, you have noticed that one, right? No need to discuss that one. So this is in modern practice, the interconnected network use the इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज व्हाट? आईपी. आईपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म है आपका आईपी है, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल मतलब क्या है? प्रोटोकॉल मतलब बेसिकली कुछ रूल्स और कुछ रूल्स है, ठीक है. जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो उसका कुछ रूल्स आप फॉलो करते हो, राइट? कि आपको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, या फिर असाइनमेंट सबमिट करना है, जो भी करना है, आईडी कार्ड पहन के जाना है. तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलता है, बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करने रहते हैं. तो सिमिलरली इंटरनेट का भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है. तो वो जो प्रोटोकॉल है, मतलब रूल्स ही समझ लो, तो वो क्या है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके. मतलब इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे ही सोच लो कि इंटरनेट रूल्स, ओके, सो सम काइंड ऑफ रूल्स. जो रूल्स है वही आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ओके. सो देयर आर at least 3 variants of internetwork, okay, internetwork, depending on who administers or who participates in them, okay. बेसिकली आपका एक होता है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट. ये 3 टाइप का आपका नेटवर्क होता है, ओके. तो ये हम लास्ट क्लास नहीं पढ़े थे, सो विल डिस्कस. सो व्हाट इज इंट्रानेट? इंटरनेट क्या है? सो एन इंट्रानेट इज अ सेट ऑफ networks, okay, using internet protocol and IP based tools such as web browsers and file transfer applications that is under control of a single administrative entity, okay. So basically आपका जो इंट्रानेट होता है वो सम सेट ऑफ नेटवर्क्स रहता है, ओके. बहुत सारे नेटवर्क्स, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जियो का नेटवर्क हो गया, एयरटेल का नेटवर्क हो गया, तो रिलायंस, हाँ, रिलायंस जियो तो एक ही है, मतलब से वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया. तो ये सम सेट ऑफ नेटवर्क्स हो गया, ठीक है. तो जिसको हम लोग इंटरनेट बोलेंगे, ओके, यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड आईपी बेस्ड टूल्स, जिसमें हम लोग आईपी यूज करते हैं या फिर आईपी टूल्स यूज करते हैं, आईपी बेस्ड टूल्स, जैसे वेब ब्राउजर, सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. मोबाइल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्राउज़र यूज़ करते हैं. तो ब्राउज़र में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो किसके थ्रू सर्च करते हैं? इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं, राइट? सो वट एवर वी सर्च थ्रू द ब्राउज़र, वी रिक्वायर इंटरनेट, okay. So it is called as some set of networks, okay. So in this also we use file transfer applications, okay, because we are sharing the files with each other, okay. Let's say one website is uploading that data and the user is downloading the data, okay. So that means what? The
file is transferring in between the web browser and the users, right? So that is under control of a single administrative entity. ये एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के थ्रू होता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी यहाँ पे लेट से जो आपका इंटरनेट में जो बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं, जैसे कि जियो का एडमिन हो गया, एयरटेल का एडमिन हो गया, वोडाफोन का एडमिन हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे ये सारी चीज़। ओके, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई मतलब आपका बाहर का कोई आदमी उसमें कुछ छेड़छाड़ ना कर दे, या फिर कोई चीज़ आपका लीक ना हो, कोई भी चीज़ आपका डेटा लीक ना हो, या फिर हैक ना हो जाए, राइट? सो सिमिलरली एक्स्ट्रानेट क्या होता है? सो एन एक्स्ट्रानेट कैन बी अंडरस्टूड एज an intranet mapped onto the public network or some other transmission system, cannot be accessible to the general public but managed by more than one company's administrator। तो ये जो एक्स्ट्रानेट होता है बेसिकली ये आपका इंटरनेट की तरह ही है, पर ये बेसिकली जो डेटा होगा वो पब्लिक में मतलब पब्लिक इंटरनेट के थ्रू अपलोड होगा, पर उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, जनरल पब्लिक कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर ही एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ऐसा कि कोई एक बहुत सिक्योर चैनल। ओके, वो एक सिक्योर चैनल जो एक जनरल पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको एक्सेस कर पाएगा, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेस कर पाएगा, राइट? So similarly, internet, we have already discussed this several times. So the internet is a global system of interconnected computers and networks that is interchange data packet using okay, switching using the standardized internet protocol suite TCP or IP. Okay, it is a network of networks। वही बता रहा था कि when it is network of networks, it is called as internet। Okay, so that consists of million of private and public, academic, business and government network। Okay, I've already discussed, so no need to discuss it again। So these things I'll be sharing with your description, you can check it out। Okay, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे ये अपलोड किया कर दिया जाएगा नोट्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, राइट? सो नाउ विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ योर नेटवर्क। ओके, नेटवर्क के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, एक होता है आपका NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो क्या है? सो नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क अडेप्टर उसको हम बोल सकते हैं, or you can say network interface card। Okay, so this is a piece of your hardware designed to allow computers to communicate over a computer network। Okay, तो बेसिकली ये क्या है, पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है, छोटा सा हार्डवेयर होता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर में आपके मोबाइल में देखोगे एक IC कार्ड होता है। ठीक है, तो वो IC कार्ड में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो, वो पॉसिबल होता है IC कार्ड के थ्रू। ओके, अगर IC का कार्ड वहाँ से कट गया तो आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, राइट? राइट, तो those who are watching, so just give me a thumbs up and tell you have understood till this point। Okay, if you have understood, mention in the chat box that understood the concept, everybody please go ahead, just waiting for you। Okay, those who are watching, if you have understood, then give a thumbs up and just write down understood in the chat box, right?
Okay, Satyajit, okay, great. So those who are watching, I'm just suggesting you guys, please be there. Okay, don't just leave the class. Okay, present over here. Okay, so we're discussing some important things over here. Okay, so NIC is what? In network interface card. Okay, सो बेसिकली ये पीस ऑफ जो हार्डवेयर होता है इसको डिज़ाइन किया जाता है। क्या कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि हम लोग कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्शन दे पाएँ, कुछ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाए, राइट। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में बात करते हो या फिर कंप्यूटर में कुछ ईमेल सेंड करते हो, कुछ भी करते हो नेटवर्क में हो तो नेटवर्क के थ्रू आप कुछ काम करते हो तो उसमें नेटवर्क आईसी कार्ड होना चाहिए। अगर है तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। So it allows user to connect with each other by the use of what your cables and wirelessly. Okay, वायरलेस के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो और आप केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो सिमिलरली रिपीटर्स, व्हाट इज रिपीटर? So it is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher power level. Okay, to other side of an obstruction so that the signal can cover long distances without degradation. Okay, so जैसे कि आप फ़ोन में बात करते हो, राइट। तो जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस रहता है। लेट्स से ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। ओके, डिवाइस में आप कनेक्ट करोगे, राइट। तो उसको एक सिग्नल चाहिए। तो पहले क्या होगा कि ये ट्रांसमिट होगा एक रिपीटर के पास, ठीक है। अब देखोगे बहुत सारे बेस स्टेशन रहता है एंटीना जैसे, ठीक है, एंटीनास रहता है ना। तो तो उसमें क्या होता है कि ये डिवाइसेस से जाता है वहाँ और वहाँ से इधर ट्रांसमिट होता है, तो रिपीटर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो so in most twisted pair Ethernet configurations, repeaters are required for cable runs longer than 100 meters away from the computer. Okay, तो बहुत सारे इथरनेट कॉन्फ़िगरेशंस रहता है जिसमें रिपीटर यूज होता है, ठीक है। रिपीटर का यूज होना जरूरी है इन कम्युनिकेशन। ओके, सो similarly hub we have, what is hub? So hub contains multiple ports. Okay, so when a packet arrives at one port, it copied to all ports of the hub for transmission. ठीक है, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ हब का, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे होगा ना बहुत सारे आप यूएसबी हब देखे होगे, राइट। यूएसबी हब, तो जिसमें ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होगा और उसमें यूएसबी कनेक्ट करने के लिए एक पोल होगा, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारे लेट्स से पावर बैंक आप चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, या फिर पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे पेन ड्राइव आप कनेक्ट करके उसको एक कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो वो क्या हो गया, हब हो गया, यूएसबी हब हो गया, राइट, या फिर पेन ड्राइव का हब हो गया। तो सिमिलरली ये नेटवर्क हब होता है जिसमें क्या होता है कि आपका डेटा मल्टीपल पोर्ट्स में वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है कि कॉपी हो जाता है। जैसे जैसे कि मैं बताता हूँ, लेट से एक डेटा पैकेट आपका अराइव हो गया एक पोर्ट पे, तो वो कॉपी हो जाएगा बाकी सारे हब में, कॉपी हो जाएगा और फाइनली ट्रांसमिट होगा किसमें, कंप्यूटर में। ओके, सो नाउ another point is your bridges, right? You see here. So what is bridges? A network bridge connects multiple network segments. So once the bridge associates a port and an address, it will send the traffic for that address only to that port. Bridges to send broadcast to all ports except the one on which the broadcast was received. ओके, तो नेटवर्क ब्रिज क्या होता है कि नेटवर्क ब्रिज में आपका जो मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स रहता है, ठीक है। आप जैसे देखे होंगे कि
बहुत सारे रोड्स, जैसे दो साइड का रोड होता है जो कि एक ब्रिज के साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। एक लंबा सा ब्रिज है जिसमें आप आना जाना करते हो, राइट। ये एक निकलता है एक रास्ते से, राइट, ये एक रास्ते से निकलता है, तो कनेक्शन रहता है, राइट। सो सिमिलरली ये ब्रिज जो होता है ये मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। लेट्स से ये एक नेटवर्क सेगमेंट 1 है, ये नेटवर्क सेगमेंट 2 है, तो नेटवर्क सेगमेंट 1 नेटवर्क सेगमेंट 2 दोनों को ये जॉइंट करता है कौन, एक ब्रिज। ओके, सो it will send the traffic for that address only to that port। तो ये जो नेटवर्क में नेटवर्क जी, ये जो ब्रिज है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ट्रैफिक है ये पर्टिकुलरली उस नेटवर्क ट्रैफिक को, नेटवर्क एड्रेस पे उसको क्या करेगा, सेंड करेगा। ओके, सो ब्रिजेस डू सेंड ब्रॉडकास्ट टू ऑल द पोर्ट्स एक्सेप्ट द वन ऑन विच ब्रॉडकास्ट वाज रिसीव। तो जहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ है, जो मैसेज वहाँ से जिस सिग्नल नेटवर्क से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी ब्रॉडकास्ट जो जो पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स, उसको वो क्या करेगा, सेंड कर देगा डेटा। ओके, सिमिलरली और एक है स्विचेस। सो स्विच इज अ मार्केटिंग टर्म that encompasses routers and bridges as well as the devices that may distribute traffic on load और बाय एप्लीकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि वेब यूआरएल आइडेंटिफायर। ओके, तो ये बेसिकली एक मार्केटिंग टर्म है। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्या यूज़ होता है, आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे कि हम लोग जियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जैसे जियो.com हो गया, ठीक है। तो वेबसाइट को यूआरएल आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर की ज़रूरत होता है, राइट। सो स्विच इज अ मार्केटिंग टर्म दैट encompasses routers and bridges as well as the devices that may distribute traffic on the load और application। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो थ्रू थ्रू द एप्लीकेशन कंटेंट्स। सिमिलरली राउटर्स, तो राउटर्स तो बहुत ही सिमिलर, बहुत ही क्या है, फैमिलियर टर्म है। तो ये आप लोग आपके हॉस्टल्स में लगे होते हैं, आपके घर पे भी लगे रहता है ये राउटर। राउटर बेसिकली क्या होता है कि डाटा जो पैकेट्स होता है उसको राउट करता है, बेस्ट पाथ में उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, राइट। So you see here, there are networking devices that forward data packets between networks, okay, using headers and forwarding tables to determine the best path to forward the packets. Routers also provide interconnectivity between like and unlike media. Okay, so this is accomplished by examining the header of a data packet and making decision on the next hop to which it should be sent। तो देखो बेसिकली आपका जैसे कि नेटवर्क, एक नेटवर्क जहाँ एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है जहाँ से आपका डेटा पैकेट सेंड होगा। तो ये एक राउटर है। राउटर बेसिकली क्या करेगा कि डेटा पैकेट्स को राउट राउट मतलब क्या है, बेसिकली आपका पाथ को क्या करेगा, वो गाइड करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, राइट। तो वो अकॉर्डिंगली वो उसका एल्गोरिदम सेट होगा, जिस वो एल्गोरिदम के थ्रू वो क्या करेगा, डेटा पैकेट को सही रूट में उसको वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और कुछ नहीं, बस यही है। आप उसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिकली जो भी नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क्स रहता है जहाँ जो नेटवर्क से डेटा ट्रांसमिट होता है, तो वो डेटा को क्या करेगा, सही रूट में उसको क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, डेटा उसको ट्रांसमिट कराएगा, ठीक है। तो वही आपका क्या है, राउटर। ओके, सो अभी सबका थोड़ा पिक्चर दे दिया है, तो जिसमें आपको समझने के लिए इजी होगा। तो देखो ये एक नेटवर्क ब्रिज का पिक्चर है, देख सकते हो, राइट। ये एक नेटवर्क हब है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लैन कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लैन केबल रहता है, लैन केबल रहता है, उसको केबल को आप क्या करोगे, उसमें इंसर्ट करोगे। ये एक लैन है, ये एक लैन है, ये बहुत से लैन है, ये लैन केबल को आप इधर इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो क्या होगा,
बहुत सारे लैन केबल को आप एक साथ इंसर्ट कर सकते हो कि आप अब नेटवर्क आपको स्ट्रेंथ अच्छा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ये एक रिपीटर है। रिपीटर क्या है कि यहाँ से नेटवर्क सेंड होता है, जैसे जैसे कि आप, मैं बात कर रहा था, लेट से आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो एक नेटवर्क से, यहाँ से एक नेटवर्क है, नेटवर्क से आप जाएगा यहाँ पे वायरलेस रिपीटर के पास, और रिपीटर से वापस ये दूसरे यूज़र के पास आएगा। ओके, सो नेटवर्क स्विच ऑलरेडी डिस्कस, ये उसका पिक्चर है, देख लो। और ये एक राउटर है। ओके, राउटर जो आपका लगा रहता है, घर पे भी लगा रहेगा, देखोगे, या फिर कॉलेज में हो, घर पे हो, लगा रहता है, ऑफिस में लगा रहता है राउटर। ओके, so next class we'll discuss this client server and the OSI model. OSI model भी एक फेमस टॉपिक है और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इनेबल कर देता हूँ। ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फॉर सेमिस्टर। ओके, एग्ज़ाम में आता है बहुत बार ओएसआई मॉडल। अगर आपका फुल मार्क होता है 10 मार्क्स, तो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या फिर कभी कभार 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। सो दोज हु आर हैविंग दिस नेटवर्किंग subject, mark me word, you will be getting this question for sure. Okay, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ओएसआई मॉडल, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, विल डिस्कस टुमारो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।